1. Avert, verb. ठहरना, रुकना, मोड़ना. Prevent or ward off an undesirable occurrence. 2. Peril, noun. खतरा, खौफ, डर. Serious and immediate danger. 3. Tyranny, noun. जुल्म, जाबिराना हुकूमत. Cruel and oppressive government or rule. 4. Predicament, noun. बुरी हालत, खतरनाक सूरत हाल. A difficult, unpleasant, or embarrassing situation. 5. Definitive, adjective. कति, फैसलाकुन, बिल्कुल वाज़े. Of a conclusion or agreement, done or reached decisively and with authority. 6. Paradigm, noun. नक्श अव्वल, नमूना, मिसाल, इब्तिदाई. A typical example or pattern of something, a pattern or model. 7. Predicament, noun. बुरी हालत, खतरनाक सूरत हाल. A difficult, unpleasant, or embarrassing situation. 8. Proliferation, noun. बढ़ना, फूलना. Rapid reproduction of a cell, part, or organism. 9. Reassess. असर नो जायजा लेना, दोबारा तायुन करना, दोबारा जांचना. Revise or renew one's assessment. 10. Punitive, adjective. सजा से मुतालिक, अजाब, काबिल सजा. Inflicting or intended as punishment. 11. डिटर, वर्बन हौसला शिकनी करना, किसी काम से रोकना. Discourage someone from doing something by instilling doubt or fear of the consequences. Example, only a health problem would deter him from seeking re-election. 12. Bulge, noun plus verb. उभार, गोमर. गोल उभार. फूलना उभरना. बेडोल उभरना फूलना. बाहर निकल आना, उभर आना. Meaning. Bulge, noun. It refers to a rounded swelling or a protruding part of something. Bulge, verb. To swell, protrude, or expand beyond the usual or expected size or limit. Another usage of bulge as a verb is in the context of war, where it refers to a sudden forward movement of a group of troops, especially one that breaks through enemy lines. The strategic choices most consequential to Pakistan's future lie within. They involve dealing with recurrent economic crises, providing effective governance, defeating terrorism, making education accessible to all its children and generating jobs to absorb the population's youth bulge to avert a potential demographic disaster. The implications of these internal challenges for national security are apparent and can be ignored only at great peril to the country. But external security challenges have been no less imposing since the country's inception, confronting it with enduring dilemmas. The burden of history and tyranny of geography, a volatile neighborhood and the headwinds of geopolitics unleashed by big power competition, have consistently put security from external threats at the top of Pakistan's national agenda. Contested borders inherited from colonial rule compounded this dilemma. Few books have been written by Pakistanis about how the country's enduring external security predicament motivated its quest for a nuclear capability. Feroz Khan's Eating Grass was the first to chronicle Pakistan's nuclear history and the challenges it faced to acquire a nuclear weapons capability. The book's concern with how Pakistan surmounted numerous obstacles to master the nuclear fuel cycle left a gap in the role of diplomacy and how its diplomats defended the country and promoted its interests in the nuclear domain. A compelling new book now fills that gap. The Security Imperative, Pakistan's Nuclear Deterrence and Diplomacy by Zamir Akram, deals with nuclear diplomacy with sharp insight and extraordinary breadth. Having dealt firsthand with nuclear issues and negotiations, Akram, an outstanding diplomat, is especially qualified to tell the definitive story of Pakistan's quest for security by acquiring credible nuclear deterrence in which diplomacy played a crucial role. Pakistan's main challenges lie within, but external security has also posed enduring dilemmas. The main theme of his well-researched book is the security-driven nature of Pakistan's nuclear deterrence.
In the opening chapter, Akram describes how the country's security compulsions were the consequence of history and geography. The legacy of disputes and hostility with India shaped its security paradigm. Pakistan initially relied on an external balancing strategy, including military alliances, to assure its security. But this failed to prevent India's aggression in 1971. That, together with the 1974 Indian nuclear explosion, convinced Pakistan to seek a nuclear capability as a security guarantor. Geography worsened Pakistan's security predicament, given its location in an unstable neighborhood with challenges emanating from Afghanistan. A key theme in the book is the discriminatory treatment meted out to Pakistan by the US-led West and how Pakistan's diplomacy navigated through this while protecting and advancing its nuclear and missile programs. Akram recalls how after India's 1974 nuclear explosion, the US ended up punishing Pakistan for what India had done. Through a series of legislative measures such as the Glenn, Symington and Salar's amendments, the U.S. effort was essentially to prevent Pakistan from pursuing its own nuclear weapons capabilities. Pakistan's civilian nuclear cooperation agreements were cancelled under American pressure, first with Canada and then the reprocessing plant agreement with France. Thereafter, Pakistan had to pursue a covert nuclear weapons program. Pakistan used the period of its close relationship with the U.S. following the 1979 Russian invasion of Afghanistan to build its nuclear capability, capitalizing on what Akram calls the strategic space provided by this development. So long as it didn't conduct a nuclear test, make a weapon core and share technology, U.S. pressure was kept at bay, he writes. Waivers on American non-proliferation laws and adherence to the tacit understanding enabled Pakistan to receive assistance and also move forward to build its capabilities. But no sooner had the Russians been forced to withdraw from Afghanistan when the U.S. imposed sanctions on Pakistan in October 1990 under its Pressler Law. Islamabad protested, pointing out that unilateral measures aimed only at Pakistan would not promote regional non-proliferation. It also pressed on with its nuclear plans, conducting cold tests and shifting from its uranium-based nuclear weapons capability to the plutonium route. Akram outlines the diplomatic initiatives taken by Pakistan in the 1990s, offering a series of regional non-proliferation proposals to the US and India. In the chapter Roller Coaster, he describes developments in which I was also intimately involved in our nuclear diplomacy as Pakistan's ambassador to Washington. Pakistan-US relations had then plunged into crisis, which only eased after Prime Minister Benazir Bhutto came to power, undertook an official visit to Washington and was able to convince President Bill Clinton that Washington needed to reassess its policy because its punitive approach had not worked. Clinton was to later publicly acknowledge that it was unfair to keep both Pakistan's money and the F-16s it had paid for. It was then that Senator Hank Brown informed me, as mentioned in the book, that he intended to move an amendment to the Pressler legislation to lift the ban on economic assistance to Pakistan and release all embargoed military equipment, including the F-16s. Between then and the success of the Brown Amendment, for which the Pakistan embassy lobbied hard, the Clinton administration tried to secure a unilateral nuclear concession from Pakistan in return for supporting the amendment. Pakistan refused, including the proposal to cap its nuclear weapons program in exchange for release of the F-16s. I was present in meetings during the visit of Army Chief Gen Wahid Khakar to Washington when he flatly told the Americans that as Pakistan's national security was non-negotiable, they could keep the planes. In the end, the Brown Amendment was adopted, economic sanctions lifted and military equipment worth $368 million was released except the F-16s. Akram details the talks between the US and Pakistan before and after Pakistan's nuclear tests that followed India's in 1998. Later chapters again pick up the theme of nuclear discrimination, discuss the 2005 India-US nuclear deal and the implications for Pakistan of this nuclear exceptionalism. Pakistan's response and plan to achieve full-spectrum deterrence, announced in 2011, is also appraised with clarity. Accounts of Pakistan's bilateral and multilateral nuclear diplomacy contain many useful insights.
Important as the nuclear capability has been to provide Pakistan with the means to deter external aggression, an important conclusion of the book is that nuclear deterrence cannot deal with internal challenges which Pakistan is facing. That in turn can weaken deterrence. The writer is a former ambassador to the US, UK and UN. Published in Dawn, March 27, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सबसे अहम स्ट्रेटेजिक इंतखाब इसके अंदर हैं। इनमें बार बार पैदा होने वाले माशी बहरानों से निमटना, मुअस्सर गवर्नेंस फराहम करना, दहशतगर्दी को शिकस्त देना, अपने तमाम बच्चों के लिए तालीम को काबिल रसाई बनाना और मुमकिना आबादियाती तबाही से बचने के लिए आबादी के नौजवानों की तादाद को जज्ब करने के लिए रोजगार के मौके पैदा करना शामिल है। कौमी सलामती के लिए इन दाखिली चैलेंजों के मुज़मरात वाज़ेह हैं और उन्हें सिर्फ मुल्क के लिए बड़े खतरे में नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन मुल्क के क़याम के बाद से ही बैरूनी सलामती के चैलेंजेस भी कम असरअंदाज नहीं हुए हैं और उन्हें दायमी उलझनों का सामना है। तारीख के बोझ और जुग्राफिया के जबर, एक गैर मुस्तहकम पड़ोस और बड़ी ताकतों के मुकाबले की वजह से जुग्राफियाई सियासत की रुकावटों ने बैरूनी खतरात से तहफ़्फ़ुज़ को मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान के कौमी एजेंडे में सरे फहरिस्त रखा है। नौआबादियाती हुक्मरानी से विरासत में मिलने वाली मुतनाज़ा सरहदों ने इस मखमसे को मज़ीद बढ़ा दिया। पाकिस्तानियों ने इस बारे में बहुत कम किताबें लिखी हैं कि किस तरह मुल्क की बैरूनी सलामती की दायमी सूरत हाल ने इसे जौहरी सलाहियत हासिल करने की कोशिश की तरगीब दी। फिरोज़ खान की ईटन ग्रास पाकिस्तान की जौहरी तारीख और जौहरी हथियारों की सलाहियत हासिल करने के लिए दरपेश चैलेंजों को बयान करने वाली पहली फिल्म थी। इस किताब में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया है कि किस तरह पाकिस्तान ने जौहरी ईंधन के चक्कर में महारत हासिल करने के लिए मुतअद्दिद रुकावटों को अबूर किया और सिफारतकारी के किरदार में खला पैदा किया और किस तरह इसके सिफारतकारों ने मुल्क का दिफा किया और जौहरी शोबे में उसके मफादात को फ़रोग़ दिया। अब एक ज़बरदस्त नई किताब इस खला को पर करती है। सलामती की ज़रूरियात, ज़मीर अकरम की जानिब से पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस और डिप्लोमेसी जौहरी सफारतकारी को तेज़ बसीरत और गैर मामूली वसत के साथ पेश करती है। जौहरी मामलात और मुज़ाकरात से बराह रास्त निमटने के बाद अकरम एक बेहतरीन सफारतकार, ख़ास तौर पर काबिल एतमाद न्यूक्लियर डिटरेंस हासिल करके पाकिस्तान की सलामती की तलाश की हतमी कहानी बताने के अहल हैं, जिसमें सफारतकारी ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान को दरपेश बुनियादी चैलेंजेस अंदरूनी हैं, लेकिन बैरूनी सलामती ने भी पायदार मसाइल को जन्म दिया है। उनकी तहकीकी किताब का मरकज़ी मौजू पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटरेंस की सलामती पर मबनी नौइयत है। इफ्तिताही बाब में अकरम ने बताया कि किस तरह मुल्क की सलामती की मजबूरियां तारीख और जुग्राफिया का नतीजा थी। भारत के साथ तनाज़ात और दुश्मनी की विरासत ने उसकी सलामती के पैराडाम को तश्कील दिया। पाकिस्तान ने इब्तिदाई तौर पर अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए फ़ौजी इत्तेहाद समेत बैरूनी तवाज़ुन की हिकमत अमली पर इन्हिसार किया, लेकिन ये 1971 में भारत की जारहियत को रोकने में नाकाम रहा। 1974 अशारिया के भारतीय एटमी धमाके ने पाकिस्तान को सलामती के ज़ामिन के तौर पर जौहरी सलाहियत हासिल करने पर कायल किया। जुग्राफिया ने पाकिस्तान की सलामती की सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया, क्योंकि इसका महल वक़ू एक गैर मुस्तहकम पड़ोस में है जहां अफ़गानिस्तान से चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। इस किताब का एक अहम मौजू अमरीका की ज़ेर क़ियादत मग़रिब की जानिब से पाकिस्तान के साथ इम्तियाज़ी सलूक और अपने जौहरी और मिज़ाइल प्रोग्रामों के तहफ़्फ़ुज़ और इसे आगे बढ़ाने के दौरान पाकिस्तान की सिफारतकारी को किस तरह आगे बढ़ाया गया है। अकरम याद करते हैं कि किस तरह 1974 में भारत के जौहरी धमाके के बाद अमरीका ने पाकिस्तान को भारत के किए गए इक़दामात की सज़ा दी थी। गलीन, सिमनेक्टन और सोलरस जैसे मुतअद्दिद कानूनी इक़दामात के ज़रिए अमरीकी कोशिश बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को अपने जौहरी हथियारों की सलाहियतों को हासिल करने से रोकने के लिए थी। पाकिस्तान के सिविलियन जौहरी ताउन के मुआहदे अमरीकी दबाव पर मनसूख किए गए, पहले कनाडा के साथ और फिर फ्रांस के साथ रीप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा। इसके बाद पाकिस्तान को खुफिया जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पड़ा।
पाकिस्तान ने 1979 में अफगानिस्तान पर रूसी हमले के बाद अमेरिका के साथ अपने करीबी ताल्लुकात के दौर को अपनी जौहरी सलाहियत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया और अकरम ने पेशरफ्त से फराहम करदा स्ट्रेटेजिक स्पेस का फ़ायदा उठाया। वो लिखते हैं कि जब तक इसने जौहरी तजुर्बा नहीं किया, हथियारों का मरकज़ नहीं बनाया और टेक्नोलॉजी का तबादला नहीं किया, अमरीकी दबाव को दूर रखा गया। जौहरी अदम फैलाव के अमरीकी कवानीन पर इस्तिस्ना और खामोश तफहीम की पासदारी ने पाकिस्तान को मदद हासिल करने और अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने के काबिल बनाया। लेकिन जब अक्टूबर 1990 में अमेरिका ने अपने पर्सनल कानून के तहत पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद की तो रूसियों को अफगानिस्तान से इनखला पर मजबूर होना पड़ा। इस्लामाबाद ने एहतजाज करते हुए निशानदेही की कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा इक़दामात से इलाकाई अदम फैलाव को फ़रोग़ नहीं मिलेगा। उसने अपने जौहरी मंसूबों पर भी जोर दिया, कोल्ड टेस्ट किए और यूरेनियम पर मबनी जौहरी हथियारों की सलाहियत से प्लूटोनियम रूट पर मुंतकिल किया। अकरम ने 1990 की दहाई में पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए सिफारती इक़दामात का खाका पेश किया और अमेरिका और भारत को जौहरी अदम फैलाव की मुतअद्दिद इलाकाई तजावीज़ पेश की। रूलर कोस्टर के बाब में उन्होंने ऐसी पेशरफ्त ओहे का जिक्र किया है जिनमें वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से हमारी जौहरी सिफारतकारी में भी शामिल था। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त बहरान का शिकार हो गए थे जो वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के इक़्तिदार में आने के बाद ही कम हुए। उन्होंने वाशिंगटन का सरकारी दौरा किया और सदर बिल क्लिंटन को कायल करने में कामयाब हुए कि वाशिंगटन को अपनी पॉलिसी का असर-ए-नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है क्योंकि इसका तादीबी नुक्ता नज़र कारगर साबित नहीं हुआ था। हिलरी क्लिंटन को बाद में अवामी तौर पर तस्लीम करना पड़ा कि पाकिस्तान का पैसा और F-16 दोनों रखना गैर मुनसिफाना था। इसके बाद सेनेटर हीनक ब्राउन ने मुझे बताया कि वो पर्सनल कानून में तरमीम लाने का इरादा रखते हैं ताकि पाकिस्तान को दी जाने वाली माशी इमदाद पर आयद पाबंदी खत्म की जा सके और F-16 समेत तमाम ममनुआ फौजी साजो सामान को रहा किया जा सके। इस वक्त और ब्राउन तरमीम की कामयाबी के दरमियान, जिसके लिए पाकिस्तानी सफारत खाने ने सख्त लॉबी की, क्लिंटन इंतजामिया ने तरमीम की हिमायत के बदले में पाकिस्तान से एकतरफा जौहरी रियायत हासिल करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने F-16 तैयारों की रिहाई के बदले अपने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को महदूद करने की तजवीज़ शामिल करने से इनकार कर दिया। मैं आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ के दौरा वाशिंगटन के दौरान मुलाकातों में मौजूद था जब उन्होंने अमरीकियों से साफ साफ कह दिया था कि चूंकि पाकिस्तान की कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए वो तैयारे अपने पास रख सकते हैं। आखिर में ब्राउन तरमीम मंजूर की गई, इक्तिसादी पाबंदियां उठा ली गई और F-16 तैयारों के अलावा $368 मिलियन मालियत के फौजी साजो सामान जारी किए गए। अकरम ने 1998 में भारत के जौहरी तजुर्बात के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तफसील बयान की। बाद के अबवाब में एक बार फिर जौहरी इम्तियाज़ का मौजू उठाया गया है। 2005 के भारत अमेरिका जौहरी मुआहदे और इस जौहरी अस्सना के पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात पर तबादला ख्याल किया गया है। 2011 में ऐलान करदा फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस के हुसूल के लिए पाकिस्तान के रद्द अमल और मंसूबे को भी वाज़े तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान की दो तरफ़ा और कसीर अलजिहती जौहरी सफारतकारी में बहुत सी मुफीद बसीरत मौजूद हैं। चूँकि जौहरी सलाहियत पाकिस्तान को बैरूनी जारहियत को रोकने के ज़राए फराहम करने के लिए अहम है, इस किताब का एक अहम नतीजा ये है कि न्यूक्लियर डेटरेंस पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी चैलेंजों से नहीं निमट सकता है। इसके नतीजे में डेटरेंस कमज़ोर हो सकती है। मज़मून निगार अमेरिका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ सफ़ीर हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 27 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.